और हाँ, मैटर नहीं करता आप तो क्योंकि आप प्रोफेशनल किया या नहीं किया। बहुत ज्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगा, चलो छोड़ो इस ज्ञान को। तो देखो आज की इस वीडियो में सीधा सीधा मुद्दा ये
Yeah, the Hanif Mohammed cap at the moment is with the Zalmi skipper. So you've got to hit other boundaries and sixes to win motorbikes and cut loose. But there's certainly been some great prizes up for grabs. Well bowled. Lisa thinks it's off the pad. I went for the signal. Signal. Runs. पैंटीन जिसमें है चावलों का पानी और प्रो विटामिन फॉर्मूला जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिन में। पैंटीन बाल गिरें कम तो खुले ज्यादा। मेरी पहचान आज भी शमा की तरह रोशन है। मैंने जो भी किया दिल से किया। शमा वनस्पति और कुकिंग ऑयल बोले दिल की बोलियां। कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल, वाओ। डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। इनकी PSL टीम ने ऐन मौके पे कैच ड्रॉप कर दिया। अब ये इसका इजहार सारी दुनिया से करेंगे। तो सोच मत, हो जा जज्बाती। Was reverse swing which came into play in the last leg of the game, and it did really well. That is the reason Haris has been capped till late. He bowled one over in the beginning and then he's been brought back and he's bowling those beautiful cutters. Haven't seen much of a reverse swing so far. It is down at pace. He's not bowling quickly. Normally he's touching 150 by now. And we have seen how it's difficult to score more runs at the end of the inning. This partnership 30 of 26. Mohammad Haris striking at 154. Still it's almost run a ball. Because most of his runs, the most impactful runs were in the first 10 overs. It's the Yorker right on that occasion. Helped themselves at times this evening, have they, the Lahore Qalandars, with some of their fielding. Been just a little bit off colour. Early drop from Fakhar Zaman, it was a really tough one. David Visa, another tough one. Very ordinary football work from Haris Ralph. Comfortable catch back to the bowler there, a little misfield from Tahir Baig. Haven't been at their best, the home side. Well, they're still in the game after doing all this work. And also, don't forget, the first few overs, they were all over the place. They were trying to get those Yorkers in. And they just got the rhythm now. And now you feel that they're in control. The cutters, I think, the slow delivery, they found out little late that this is not the pitch where you have to bowl quickly. You have to bowl those cutters. Early on, they didn't try to hit the right length. I thought this pitch had a little bit for the faster bowlers, and those Yorkers, the full length deliveries, all those boundaries, they have to pay for it now. I mean, 19 boundaries and 2 sixes in 16.3 overs. That's a lot on this pitch. That away. There's protection out there, so the field is well set at the moment for those cutters.
some really good bowling, just 4 of 4 in the 17th over. And that Rashid Khan over was pretty good. Jazz Fan Pulse question: who has the best bowling figures in HBL PSL history? Well, sorry, match. Shane Shah or Ravi Bopara? Takes 58-58. 1 or 2, take your pick. This is an area where the Zalmi have struggled. Without Rodman Powell, Neesham has been a bit off colour of late. Rajapaksa hasn't played an innings of substance. I think the credit also should be given to Lahore Qalandars. In the last 5 overs, they've been outstanding, 9.62. Gets that one away, over a wide-ish extra cover, 1 bounce for 4. The boundary of the last over, last ball, 141 for 3. यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी कढ़ाई और तेल का तड़का। एरियल का नया ब्लू फॉर्मूला जिद्दी दागों का करे सफाया। धोते जाओ बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट, *6688# मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Shaheen back for his last again. This pace off just starts with one of those little cutters he's got. And it's also important that you don't bowl too full. You have to really bang it short, because the ball sticks in the pitch, especially those cutters, not the seam up delivery. Seam up comes onto the bat a bit better. Finds the gap out at deep mid wicket, but Rashid does really well. Brilliant fielding. Excellent cricket overall. A very good shot right in between the fielders. Excellent fielding from Rashid Khan. What a cricketer he is. 1 over has changed the complexion of the game. That 2 wickets in his over. Now putting his body behind the line on the boundary. It never gives up, Rashid Khan. Over the top. Pace off, and I think they're just starting to get the picture now that these are coming more often than the pace on deliveries. Yeah, I think Haris have gathered that, and he knows that that's what Shaheen's gonna do, and he's not really rushing into the shot. He's waiting, and then sort of shifting his weight mid-off up in the circle, that length outside the off stump. Trouble. That's why he's so good, because he's not looking only on the leg side but keeps the offside open as well. Back of the bat. That is off the back of the bat, deliberately. 150 comes up with that boundary. Just reached his highest score in T20 cricket too, as Mohammad Haris. Good time to do it. Perfect time to do it. Just waited on that, didn't he?
He was looking to play a normal scoop shot and then decided, okay, it's outside the off stump, I can go that side. That one's away out over backward point. Should be at least two. And that is what it will be. Another good piece of fielding. We saw one earlier in the over from Rashid Khan. It was fantastic. We might just check this one, I think. That's Sikandar Raza on the boundary. Good fielding there. And he released it in time. Oh, too high is it? But he's got it. He's got plenty of it all the way or not. There's man underneath it. Man underneath it. We will check this. We will check this. It looked like it was dipping. Just unlucky if he's not gone over the rope. He's not sure. Fakhr is not sure that that ball he caught it and he was inside the boundary line. No smiles at all. They're just worried. Once again, Shaheen was looking away. Normally slow or short boundaries. Look, it's a tough one. It's a tough one for the third umpire. Is the ball dipping down? That is the question. Oh, wow. On that there, I'm thinking that's really tight. Where does the benefit of the doubt go here? Batter or bowler? It's above waist there. It is definitely above waist there, but it's supposed to be at impact or at when it passes. Good catch. Really good catch. I'm not sure whether they're going to send him on his way or not. I think they might. On his way. Been sent on his way. It's been a good innings from Mohammad Harris, but I think that is the right decision being made. 85 of 54, 153 for 4. आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी लड़ाई और तेल का तड़का। एरियल का नया ब्लू फॉर्मूला जिद्दी दागों का करे सफाया। धोते जाओ। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट स्टार 6688 मिलाए और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल। ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल। वाओ! डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। मेरे पास हैं रहबर के हॉट पॉट्स जो हर किस्म के खानों को घंटों ताजा और गर्मा गर्म रखते हैं। याद आया, बिरयानी भी तो बनाई है। रहमत, कुछ बचा भी है या सब टूट गया? बस यही बचा है, क्योंकि ये अनब्रेकेबल है। From the house of Eagle Star. लाइट एंड ग्लो से ग्लोइंग और फेयर स्किन पाना इतना ही आसान जैसे ABC। स्किन को फेयर करे, डार्क स्पॉट्स हटाए, स्किन को दे अल्ट्रा HD ग्लो। लाइट एंड ग्लो एंड लाइट अप योर वर्ल्ड। Nescafe Chill Latte. रिवाज पुराना और जायद। That's gone high as well. Who wants that? I don't think so. I don't think so, no. Never looked like it. Never ever looked like it. Well, he made a mistake. Big at short fine leg, and he just turned around too quickly, and then he turned back, and then he was just moving backward. And once the ball goes that high, going backward is very difficult, and then he slipped at the end. Nothing went his way. And the fielding issues of Lahore Qalandars continue. We have seen some close games, how costly all these mistakes will be at the end. Oh, look
Keen to just get that one away. Feel like he missed out there, Rajapaksa. You're not missing out on anything if you're in the Tapal Tea Lounge, though. Drinking Pakistan's #1 tea. Enjoying the cricket on a nice garam chai. Two from two start for Haris Ralph. Got that away into the gap at mid-wicket. Hasn't timed it perfectly, but good enough for 4. He's a very good player of onside. Very free-flowing batsman. Uses his bottom hand quite nicely. On that occasion, he just came down the pitch and then bringing his bottom hand into play. Just piercing that gap very nicely. Not an easy shot to play against Haris Rauf. He can bowl up to 147, 150 can touch that. Oh, that's 4 more. Clever. And back-to-back boundaries for Rajapaksa. Yeah, he's finding his rhythm. Rajapaksa. Once again, same. He thought of the same, and then he saw the ball was a little bit wider, and just the angle bat. Difficult shot to play. A bit of risk involved that he might get caught behind. But boundary. Problems. More problems for Lahore. And you can see the pressure building up. They know anything about that 165, 170 mark is going to be tough. So you can see it from the faces of the bowlers that the pressure is mounting. It's the Yorker right this time. Good comeback from Haris Ralph. Free hit for fans. Parkview City Winner House contest. Visit the Parkview City Facebook page and answer the question: who scored the fastest Test century for Pakistan? Chance to win a house at the end of the league. I believe he may be playing at the moment as well. I believe the gentleman may be playing cricket at the moment. Somewhere out towards the desert. Oh dear. Okay, there's a fielder there. It hasn't gone quite as fine as he was hoping. Samal, he'll keep the strike, and with 1 over to go, 165 for 4. नए Big Friends Real Really Treat के Double Treat. कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल, वाओ। डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। आया है एक नया खिलाड़ी, जिलेट ब्लू 3 फ्लेक्सी, जो दे सबसे आरामदेह शेव पूरे 7 शेव्स तक। जिलेट ब्लू 3 फ्लेक्सी अब सुपर लॉक पैक में। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। ओह, सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। रिवाज पुराना और जायका लजीज है ये, रिवायतों का अमीन। The last off pace, swing and a miss. He has been so impressive, Zaman Khan, in the death overs. Dafa News cricketing fact: Rashid Khan has 42 wickets, an average of 15.59 in HPL PSL. It is the best in any of the T20 tournaments that he plays around the world. Didn't have his best day today as far as economy is concerned, but did pick up 2 wickets. And that little one of Tom Kohler Cadmore, oh beauty, beauty. We went off pace, first ball up to 140 kilometres per hour, second ball, and rattles the poles. A very crucial over in the context of the game. You don't want
Peshawar Zalmi to get 175, 180s. For that, you have to pick out wickets. This was a beauty. Right on the money. He tried to play a similar shot early on. Got a bit of bat on it this time. Missed it completely. Wonderful delivery. Zaman Khan. He's been outstanding. Oopsie, oopsie. I think he's just touched just behind the line, and then the foot slide. I think he's fine. No issues there. He's having a good time. Zaman Khan. 2.2 overs, 15 runs, and he picked up 2 wickets. 2 very important wickets. Yep, Saga says yes, he's out, he's got to go, there's no ball. A brief stay. Amir Jamal comes to an end. It's gone for 165 for 5. मतलब डैंड्रफ वापस कल ही तो शैम्पू किया था। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए, कंधे से बोझ हटा दे। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। ओह, सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मतलब डैंड्रफ वापस कल ही तो शैम्पू किया था। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए, कंधे से बोझ हटा दे। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। ओह, सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। The new batter is on strike. And he gets one away over backward point. It'll give Anuka Rajapaksa the strike. He's played a good little cameo. Had the best of tournaments, just 4 opportunities prior to today, 72 runs, average of 18. This is a cracking Yorker. Amir Jamal, who loves hitting it down the ground. And you can see celebrations in the crowd as well. Some of the best celebrations from young kids. So far, so good. And it just continues to get better for Zaman Khan. 4 balls gone and 1 run. With that action, and then the ball's reversing a little bit, it becomes very difficult. Lasat Malinga has shown over the years that if you have a slingy action like Zaman, Lasat Malinga, can be very, very difficult to handle. Salman Irshad last night was outstanding. Oh yeah, he got back, I think, Rajapaksa. He put his bat back in the crease and then took off afterwards. It was good work from Billings, but I think this is okay. Well, we'll check it. Maybe not. I must say though, Wakar, a little curious. Zaman Khan, he's coming to the end of his 3rd. He's only gone for 16. How's he only bowled 3 overs? I've got no idea, to be very honest. He's bowled beautifully. I think the bat came down just at the right, and presence of mind. Both the left-handers, they just ran for a single because every run's going to be crucial. Yeah, it's a difficult question for me. 16, 2 wickets, 2.5 overs. Where did he miss? I think the left armour, he bowled 1 extra over. Gets that one away. Finally, they'll pick up a boundary and push that score above 170. Could be a crucial boundary from Hasibullah. Last ball of the innings. Yeah, good finish for Peshawar Zalmi. That last boundary, 6 of the over. I still feel that was a wonderful over. Look how low he went and got really under the ball, because that ball was nice and full. Played it beautifully. 171. They lost 5 wickets. Game on. I mean, this is a total where you cannot really say Lahore is out or Peshawar is in. It's a good total for a good game.
Yeah, just 73 runs in the last 10 overs, so the trend continues. It is slightly harder to score in the back 10, so you must make sure that your power play is productive. There's a decent power play again tonight from the Zalmi and Mohammad Harris's innings. सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Nestle, good food, good life. आया है एक नया खिलाड़ी जिलेट ब्लू 3 फ्लेक्सी, जो दे सबसे आरामदेह शेव पूरे 7 शेव्स तक। जिलेट ब्लू 3 फ्लेक्सी अब सुपर लॉक पैक में। आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी कढ़ाई और तेल का तड़का। एरियल का नया ब्लू फॉर्मूला जिद्दी दागों का करे सफाया। धोते जाओ बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत, सिर्फ 10 सेकंड। बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ पे रहता हूँ और उल्टे बल्ले से ये उस तरफ ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने उल्टे बल्ले का चूज़ किया। अगर ये दूसरी तरफ से चूज़ करता तो फिर शायद आउट हो जाता। बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली है आपने। पिच को देखते हुए आप समझते हो कि पिच में थोड़ी सी तब्दीली आई होगी, बैटिंग आसान हो जाएगी या मुश्किल होगी? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जब डेविड वी से 15-16 ओवर कर रहा था तो उस टाइम भी सीम हो रहा था। राजा पक्का कोच ने 1-2 बॉलें किए तो बहुत सीम हो रहा था, तो सीम भी हो रहा है, नीचे भी रह रहा है और स्लो वन है जो ग्रिप कर रहे हैं। मैंने अपने बॉलरों से बात की है, इंशाल्लाह उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान पर। चले, वेरी गुड, बहुत आला, बहुत ही उम्दा खेले हैं। ऑल द बेस्ट इन दिस मैच एंड ऑल्सो फॉर पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। थैंक यू सो मच। Ballers keeping low, 145, 150, good score, seaming a little bit. You got the pointers out, didn't you? Just got the English words, eh? Always the way, Waka. No, he enjoyed batting, and the first thing, or the most important thing he spoke about is that he thought that the pitch was tough. They bowled poorly, they gave us the easy boundaries in the beginning, and that's where we got that momentum going for us. Well, 171 for 5 looks like a good score then. Baba Harris and Roger Paksa with a little cameo at the back end. Bowling figures, 1 for 41 for Shaheen, not his best night. Zaman was very good with a couple. Rashid picked up 2, but went for 10.5 and over. So just the 5 wickets to fall, and 2 to Zaman Rashid and 1 to Shaheen Shah Afridi. So there's a spot up for grabs in the grand finale of HBL Pakistan Super League 8. This is eliminator number 2, and to get through to tomorrow night's final up against the Multan Sultans, it will be the Qalandars that need 172 to win. शोला है यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर में। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स। अभी *7777# डाल करो। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन, तुम ही तो हो। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। ट्रैक्टर सुपर डाल, फिर देख कमाल। लाइन शेल हीलिक्स फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो आपके इंजन को दे 45% ज्यादा हिफाजत, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम, एडवांस हेयर रिमूविंग फॉर्मूला, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम। कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल, वाओ। डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट।
स्टार 6688 हैश मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। Good life. वाह, क्या रेंज है ना इसकी। हाँ, रेंज तो बेहतरीन है और प्राइसेस भी। बिगेस्ट रेंज के लिए इम्तियाज, पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन। You know you're awesome. You're doing awesome. You're doing awesome. You're doing awesome. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। टपाल दानेदार, दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका, तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अब हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ अपने बालों को रखें डैंड्रफ फ्री, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। डैंड्रफ फ्री, पॉकेट फ्रेंडली। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट, स्टार 6688 हैश मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। ट्रैक्टर सुपर डाल, फिर देख कमाल। रिवाज पुराना और जायका लजीज है ये, रिवायतों का अमीन, खास खटाई, कोकेनिया। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Looking at it, so Fakhr Zaman innings would be very, very crucial if he can play with more patience. We certainly have an enthralling contest on our hands here at Gaddafi Stadium. Let's relive what happened in the first innings, though. Now let's have a look at the batting guard. Once again, some similarities. Babar starting so well, along with Haris, lovely 85 of just 54, but then losing Cadmore and signed pretty early. Rajapaksa Hasibullah just did the finishing touch, 171 for 5. Enough or not? An hour and a half will tell us. Yeah, Babar Azam came out of the box quickly, as did Zaman Khan, though. That delivery just arcing back in at the youngster Saim Ayub. But Babar is in no mood to be pinned down, neither is Mohamed Harris. The pair of them going after David Visa and co in their differing styles. Smashes down the ground from Mohamed Harris and lovely deft touches from Babar Azam. One or two fumbles in the field from Qalandars. Once again, having to bowl first has not been their favoured way of going about things in this year's HBL PSL. Mohamed Harris
showing what a dangerous player he can be. This was a massive moment in the game. It was a correct decision, but was it a good one? Well, that's an interesting question for you at home. Martin Saggers raising the finger to get rid of Baba, and Kola Cadmore went straight away afterwards, caught and bowled. But Mohamed Harris was still there, innovating, using the back of the bat to scoop one over third man before he tried one scoop too many. It was caught nicely by Fakhr on the boundary off the bowl of Shaheen Shah Afridi. Rajapaksa brought into the team to bolster the middle order, offered one or two good blows. The man Khan didn't bowl his full allotment, only got through 3 of his 4 overs, 2 for 20 for him, for the newly picked fast bowler for Pakistan. And all in all, I think the Peshawar Zalmi will be more than happy with 170, given how badly Lahore Qalandars have chased. Ruji, bowling figures. Shaheen Shah Afridi 41 in his 4, and he picked up the wicket in his last ball off his spell. Zaman Khan, I thought he was the pick of the bowlers for me, along with Rashid Khan. Zaman picked up 2 to Rashid Khan as well, and David Visa, he applied some of the breaks in that middle phase of the game. Essen, where he gets his debut game, doesn't give away too many. 171 for 5 is what Peshawar Zalmi have, and 172 to win at a run rate of 8.6 for Lahore Qalandars. Enjoy the fizz. Taste the fruit. From Nestle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. Important. Where Fakhr starts and finishes will decide where Lahore will be. Babar, Sikandar here with you. Looking at 171, you feel you got it, what you wanted? To be honest, yes, but I think we start well, but finish not well, but credit to Lahore Qalandars bowlers, they bowled very well. You're just talking about your bowlers. That's something that you would be pretty happy with, where they performed, so you can fancy your chances then. Definitely, because of yesterday match, our bowler dominates, and we will try to continue that momentum this match and execute our plans. Baba, who are the most important wickets for you out there? To be honest, everyone is important wicket, but I think Lahore is playing Fakhr, so we take early in the power. We have utilized for 6 overs and take 2-3 wickets, then I think pressure on Lahore. All right, thank you, Baba. Good luck. So 172 is what Lahore needs, and probably explaining to him, be nice in the power play. Well, if anything, Babar Azam and the Peshawar Zalmi can take some inspiration from their own performance yesterday. It was a matter of minutes when they turned the game around. Tahir Beg, well, he starts up front, 122 his strike rate, along with the Fakhr Zaman. I think Fakhr Zaman again will be the mainstay if Lahore are to chase this down. 143 his strike rate, plenty of experience, but the surface not the easiest one. And they look to make use of this power play. 4 out of 4. 4 out of 4 Lahore Qalandars have lost chasing in this year's HBL PSL. We need to stop that run and stop it right now. And as Simon Dool said earlier on today, help Fakhr out. Can't do it by himself. That's a good point you make, talking about batting first and has been their comfort zone. Also, looking at how these two teams have come into this game. First ball. Lahore lost their last round game and then they lost the qualifier. Whereas Peshawar won their last game in Pindi. And then how they played yesterday, we know that. So, different moods in the camp.
off the mark with a single, and I just feel Fakhar Zaman becomes that much more important, because the game that you're talking about, Sikandar, the qualifier, Multan versus Lahore in the power play chasing 33 for 4, and it just went spiraling down after Anwar Ali bowled a beauty of a delivery to Fakhar Zaman, and it almost was like they didn't know what to do after that. And also, don't forget Cottrell's double wicket over. It has changed everything. We've seen sides just shuffling their batting order. Hope Lahore doesn't do that. Should get home comfortably, and they do. Interesting for me that Peshawar Zalmi have decided to open the bowling with spin again, and that might be because they're just looking to backload the back end of the innings with their seamers. However, you're right, Sheldon Cottrell got the ball to swing in the evening, didn't he? And we have seen games here at Gaddafi Stadium in the second innings the ball has swung more. Interesting to see what they go with at the opposing end from Majid. First big shot over extra cover, in fact over everything, maximum. Wow, that's a magnificent shot. Might not be in the best of form, Daya Bay. That's a shot right out of the top drawer. 87 meters the distance on that hit, and it was in the slot and he's given it the treatment. All fielders up in the ring on the offside. There's a positive intent from him up front. Yeah, just a quick word on how they've been reshuffling their batting orders. Teams have been doing that yesterday. Islamabad did that and they messed it up. Multan tried it once, messed it up. They should decide Sikandar Raza's position. He's been batting 6, 7, 8. It's way too low in the kind of form he's in, and if Shaheen comes and bats early again, and as he's been doing the last 3 matches, then he's gone further down. 8 for no loss. बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। ज्यादा बिस्किट ज्यादा एनर्जी। छोड़ दे डैड नहीं छोड़ सकता, प्राइस बहुत कम है। कैच ओए ये तो 2-4 उठा दो। नाकाबिले यकीन प्राइसेस के लिए इम्तियाज पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन। हमारा रहे प्यास लग रही है, ठंडे ठार पानी का गिलास भरो और पीते जाओ। From the house of Eagle Star. कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल, वाओ। डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। Raja Paksa there. Nicely done. He can ride the bounce, and he's so good in that region. Just listen to that roar. They know how important Thacker is going to be in terms of getting the Qalandars through to another final. And they will roar him on. It's a bit of a gimmick on the front foot, high back lift. Any left-hander worth their salt will knock that one away with the new ball. Well, there's still plenty in the surface in terms of the ball coming onto the bat, and Lahore just needs to sort of hold it steady in terms of the way they approach this. And, yeah, help Fakhar out on the other end. And he just swings that man. He got protection there. Baba knows. And he's in good mood. Last time these two sides met here on this ground, Fakhar scored a 96 with 10 towering sixes. That was expansive, that was really expansive. Whatever the talk has been in the Lahore Qalandars dressing room about chasing, and I'm guessing it would have to have been, look, we need to stay positive here. We need to go out there with a similar intent as we would do if we had the ball in our hands second time round. Let's not be cowed by the occasion or by chasing. Go out there and play freely. Have a go at the opposition.
also the kind of surface where you want to make use of the power play. And we saw that yesterday in particular, the way Salman Irshad and Amir Jamal got the ball to swing reverse around the 13th, 14th over mark, it changed the game. And hence why making use of the power play today again in essentially a knockout game, a road into the final, becomes that much more important. Here's a fun fact. Lahore Qalandars are not fielding any players from Lahore. In fact, the only player from Lahore is the opposite captain, Babar Azam. And Wahab Riaz, yes. Hossein Talat, he's from Lahore, misses out today. Well, as long as we have a good game of cricket. Oh, yes. That sound, that rattle tells you a story. Babar Azam knows this one is big. Well, he wouldn't say it, or we had to coax it out of him. He said he wanted to target as many wickets as possible in the power play, hopefully get Thacker. Well, he's got Thacker. And now the rest of the Qalandars batting lineup is going to have to do a bit more than just help Thacker out. They're going to have to make the runs without him. Bit of a wild charge, missed it by quite some distance. And that might be the last we see of Thacker in this year's HPL PSL. He's gone for 6 from 5, it's 14 for 1. आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी लड़ाई और तेल का तड़का। एरियल का नया ब्लू फॉर्मूला जिद्दी दागों का करे सफाया। धोते जाओ बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। नए बिग फ्रीज रियल ग्रीनी ट्रीट के डबल ट्रीट। हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे। कर्लीज का फ्लेवर सबसे आला आला आला, हाथ न रुकने वाला, कर्लीज का फ्लेवर सबसे आला। मेरी पहचान आज भी शमा की तरह रोशन। मैंने जो भी किया दिल से किया। शमा बनास्पति और कुकिंग ऑयल, बोले दिल की बोलियां। इनकी PSL टीम ने ऐन मौके पे कैच ड्रॉप कर दिया। अब ये इसका इजहार सारी दुनिया से करेंगे। तो सोच मत, हो जा जज्बाती। Nescafe chilled mocha. That's a good over, big over with Fakhr's wicket. And it's 14 for 1. वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो why not मेरी जान। शोला है यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर में। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स। अभी *7777 हैश डायल करो। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन तुम ही तो हो। You know you're awesome, you're doing awesome, you're doing awesome, you're doing awesome. लाइन शेल हीलिक्स फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो आपके इंजन को दे 45% ज्यादा हिफाजत, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट, *6688 हैश मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। He'd already pre-decided. Had a wild swing at that Fakhr Zaman. And now the issue for Lahore, which has been their top 3 or 4, and the shuffling around and nobody else actually settling in. Now you've got two youngsters in the middle.
Now let's have the TikTok of the match first. Share your most creative TikToks using Hoja Jazbati. That's the hashtag. Win exciting prizes and a trip to Dubai. So work cut out for the two youngsters in the middle for Lahore. There's the big shot. There's the promotion. And there's the distance. Wow, what a way to open your account in PSL cricket. Talk about no fear. See that slogan a lot driving around here in Lahore and the rest of Pakistan. Fabulous strike. Nerves, what nerves? Yeah, he's been given that Abdullah Shafiq number, and those are big boots in terms of the form he's in, so he's got to show that he is special, and with that shot showing a lot of promise. Yeah, just moves away. He knows the field is not opened up. It's power play, so it's a powerful shot to get a boundary. Really good, something of the premeditated nature about this one. Figured that Majid was not going to want to be swept again, perhaps was going to drive it into the pitch a little bit. Gave himself so much room so early. Got exactly the delivery he wanted, exactly the result he wanted too. Sometimes it becomes tough for the fielding captain if you haven't seen someone ever what he does, what his strengths and weaknesses are. You only learn it through this innings. End of the over, 11 off it, 25 for 1. मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है, जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है. अब से नो मोर रैश डिसीजंस. ट्राई पैम्पर्स. स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती, स्किन को टू टोल होने से बचाए, कोई हार्श स्मेल नहीं देती. गोल्डन वर्ल्ड हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम. हम हैं फैसल बैंक, जहां मिले सूद से पाक इस्लामी बैंकारी के तमाम प्रोडक्ट्स एक मुकम्मल इस्लामी पहचान के साथ. ट्रैक्टर सुपर डाल, फिर देख कमाल. टपाल दानेदार, दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका, तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय. टपाल दानेदार. यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक. 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है. And that's your J. Super over. Ah, leggy. And gets the top of off. And a prize, well deserved. It's a bit of bat in there. You just feel there were two sounds. Baig is just making himself a bit of a sitting target here at the moment, just shuffling across his stumps, not really getting a big stride forward in. Azmatullah is zeroing in on a good length, bowling straight at the stumps. No more, no less. And because of that, Hassan, but he just walked down to Tahir Baig, probably had a chat with him. Now, I still feel the game is about making use of the power play, trying to get ahead, because we've seen funny things happen at the back end in the last two games here in Lahore. 9 from 10, Tahir Baig. He's showing some pace, a bit of movement as well. Talking about with Baig there, just a little shuffle across the crease. There's nothing particularly aggressive about it. It's a little stiff, a little nervous because he hasn't scored runs. A shuffle and then he just gets stuck in there. It's almost like a tentative push. Goes big again. And one bounce, 4 more to Hassan.
Well, he's got a bit of swag about him, hasn't he? Had a go at the ball before and found nothing but fresh air, but this time just kept the head down, watched it all the way onto the blade, banged it over mid-wicket for 4. Also just feel the way he sets up, just giving himself a little bit of room. He's eyeing either square on the leg side or the slash over the offside square. Maybe the length here could be slightly fuller. Cramp him for room, push it in further up, and see then what does he have in terms of a reply or a shot that he can play of a slightly pitched up delivery. Yeah, that's a pretty good observation, that. I think he's very much sets up as a square of the wicket player. You know what will happen though, don't you? Go full at him and then bang it straight back over his head. Well, that'll make for a good sighting for Lahore Qalandars and the fan, and see what Ehsan Bhatti is made of. Oh, that's good running. That's really good running. Brilliant. Just a couple of leg buys, but the volume just swells here at Gaddafi Stadium every time another run or two is ticked off this target. Oh, he's trying to follow him. Oh, so many extras, freebies here. Yeah, Baba doesn't like it. They're looking for a big power play. Well, it's good. It's really good pressure being exerted by Ahsan. Makes his intentions clear early, so the bowler sees him go, tries to follow him, but overcooks it. And that's all because the batter is putting the bowler under pressure. The bowler really ought to just ignore him entirely, get it up there, try and hit the top of off stump. But sometimes the intentions of the batter can make you do weird things as a bowler. Again, he just exposes his stumps. It's 38 for 1 after 4. Good life. Girlies का flavor सबसे आला 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 हाथ में रखने वाला girlies का flavor सबसे आला वाह क्या रेंज है ना इसकी। हाँ रेंज तो बेहतरीन है और प्राइसेस भी। बिगेस्ट रेंज के लिए इम्तियाज पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन। लाइट एंड ग्लो से ग्लोइंग और फेयर स्किन पाना इतना ही आसान जैसे ABC स्किन को फेयर करे। Wahab Riaz. It's gone nowhere. It's gone nowhere but the keeper's gloves. Big strike by the big man Wahab Riaz. And he has been amongst wickets in HBL PSL, the leading wicket taker. Have been expensive in the last few matches, but this time comes on to ball. It got big on him. An easy take for Hasibullah. Yeah, quick and short and into the body, so no place to go. First ball right near the splice of the bat. Wahab strikes. Bhatti out for 15, 38 for 2. मतलब डैंड्रफ वापस कल ही तो शैम्पू किया था। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए, कंधे से बोझ हटा दे। धोते जाओ बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। शोला है यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर में। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स।
अभी *7777# डायल करो। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यू फोन तुम ही तो हो। लाइट एंड ग्लो से ग्लोइंग और फेयर स्किन पाना इतना ही आसान जैसे ABC। स्किन को फेयर करे, डार्क स्पॉट्स हटाए, स्किन को दे अल्ट्रा HD ग्लो। लाइट एंड ग्लो एंड लाइट अप योर वर्ल्ड। इनकी PSL टीम ने ऐन मौके पे कैच ड्रॉप कर दिया। अब ये इसका इजहार सारी दुनिया से करेंगे। तो सोच मत, हो जा जज्बाती। Here's Wahab. He needs a strong game tonight for Zalmi. He's been off peak. Wahab Riaz, for a man who's taken more wickets than anyone else in the HBL PSL. And so often you look at your big players in big games, and yes, he's not had a great tournament, but the histories that he has in the HBL PSL, you're always looking at Wahab Riaz to deliver. Probably this is the night where Babar Azam looks at him and says, Wahab, we need you, and you're the most experienced and probably the most capable to get us through. Well, they're going to go back for two. Shafiq wants it and he'll get it. Well, the big players can draw on those resources. They can do that. And this is a pitch where Wahab Riaz will enjoy. It has got a bit of bounce, extra bounce, and it's gripping a little bit, but Wahab Riaz is not looking comfortable. He held his hamstring before, now he's walking off. The physio is coming in. Well, this will be a crushing blow for Zalmi. If he has got a hamstring pull there, the most he could do is possibly come in off 3 or 4 paces. But if he pulls that anymore, he's not going to run in at. कोकोनट और मिल्क का कॉम्बो कोको डिलाइट मजे की दुनिया में ले जाए एक ही बाइट मूड करे लाइट कोको डिलाइट कोकेनिया सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम सॉफ्ट सर्फ एक्सेल दागों पर सख्त कपड़ों पर नर्म रैबर के थर्मोस जो चाय ग्रीन टी कॉफी और हाँ इन सबको घंटों गर्म और फ्रेश रखते हैं From the house of Eagle Star. Nescafe chilled latte. यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट *6688# मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G लाइन शेल हीलिक्स फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो आपके इंजन को दे 45% ज्यादा हिफाजत ताकि आप आगे बढ़ते रहें। No shortage of pace. He's still pulling on it. He's still holding it though. That's going to be uncomfortable. .40 for 2. Zalmi at this stage were 44 for 1. Lahore Qalandars, as always, with the crowd at their back. The problem today for Peshawar Zalmi is with Wahab Riaz. They are playing 5 bowlers because they have rested Jimmy Neesham, who was the 6th bowling option. And because if Wahab cannot fulfill the 4 quota of overs, they might have to go to Saim Ayub. Jimmy Neesham was rested. Rajapaksa played in place of him. So they are operating with 5 bowlers. So the next to Mohammad Akram. Oh, well bowled. Beautifully bowled, Wahab Riaz. Not bad for a man on one leg. 5 gone, 41 for 2.
JS क्रेडिट कार्ड से फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस और ग्रोसरी पर हासिल करें इंस्टेंट कैशबैक। अभी कॉल करें और अपना JS क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खर्चों की प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्व। मेरी पहचान आज भी शमा की तरह रोशन है। मैंने जो भी किया दिल से किया। शमा वनस्पति और कुकिंग ऑयल, बोले दिल की बोलियां। कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल। वाओ! डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम, एडवांस हेयर रिमूविंग फॉर्मूला, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम। हवा में खेला, ऑन द खेलने के लिए गए थे अब्दुल्ला शफीक। इनकी विकेट बड़ी अहमियत रखती है इस मरहले पर, क्योंकि ये एक ऐसे बैट्समैन हैं, टेक्निक अच्छी है, इस पिच से आगाह हैं। 75 रन की इनिंग्स इन्होंने खेली थी इसी ज़ल्मी के बॉलिंग अटैक के खिलाफ। लेकिन ये नॉकआउट क्रिकेट है, मुख्तलिफ गेंद का खेल हो जाता है। वकार यूनुस साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। उम्दा शॉट, फुल शॉट, खासा वक्त था इस गेंद को डिस्पैच करने के लिए। बेग के पास अपने कद का फायदा उठाया ओपनिंग बैटर ने। अभी तक थोड़ा सा स्ट्रगल में देखा बेग को, और ये शॉट जो उन्होंने खेली है ये इनको काफी कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि आपको एक आधी शॉट चाहिए होती है जो आपको मोमेंटम दे, जो आपको हौसला दे। 12 गेंदों पे सिर्फ इन्होंने 13 रन ही बनाए हैं। थोड़ा सा लाहौर कलंदर गालिबन पीछे हैं। भट्टी ने अच्छी इनिंग, छोटी सी इनिंग खेली, जिसकी वजह से स्कोर, अगर ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा, दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए तो बिल्कुल करीब करीब हैं। सिर्फ लाहौर कलंदर ने 2 विकेट खोए हैं और पेशावर ने इस वक्त तक 1 विकेट खोया था। लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 8.60। अगर 8 के गिर्द ही रहेंगे, 7-8 के बीच में रहेंगे, तो आखिरी जो 5 ओवर होते हैं उसमें रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर विकेटें खोएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। और शानदार डिलीवरी ऑफ द सीम, ये कट हुई। बैट्समैन के बाद विकेट कीपर, उनकी भी 10 रन से बाहर थी। 50 रन मुकम्मल हुए लाहौर कलंदर्स के 4-22 के साथ। जो पिच है वो अपना आप दिखा रही है थोड़ा सा। हमने आज सुबह बात की थी कि इस पिच पे कुछ क्रैक्स हैं जहां पर घास है, जब गेंद उस पर पड़ता है तो इस तरह की हरकत करता है, और ये गालिबन उसी क्रैक में गेंद गिरा, सीम पर गिरा। कीपर के पास कोई चांस नहीं था इसको रोकने का। बहुत ही तेजी से गेंद गया, डाइव जरूर लगाई विकेट कीपर ने, लेकिन कोई चांस नहीं था यहां। 45 औसत स्कोर है पावर प्ले में लाहौर कलंदर्स का, उससे ये आगे निकल चुके हैं। अच्छा शॉट, बिल्कुल पल्ले के बैन से गेंद निकली, लेकिन रन नहीं मिल सकेगा। नई गेंद पर यहां पर रन्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर जूं-जूं ये इनिंग्स आगे बढ़ती है, बैटिंग इतनी आसान रहती नहीं है इनिंग्स के दूसरे हाफ में। मेरा नहीं ख्याल लाहौर कलंदर को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर आपने नए गेंद पे विकेटें ज्यादा खो दी तो पिछले ओवर तो फिर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विकेटें संभाल के रखी तो कहीं ना कहीं वो काम आएंगी, और इवन 10 की औसत या 11 की औसत तक इस पिच पर हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर होगी, लेकिन आप अपने आप को चांस जरूर देंगे। थैंक यू लॉरियो, एक दफा फिर फुल हाउस। लाहौर है जी, इसमें कोई शक नहीं है।
HBL PSL का ये 8वां एडिशन जो है, इसमें सबसे जो खूबसूरत बात थी वो यही थी कि हम जिस सेंटर में भी गए इसी तरह का क्राउड मिला। दिफाई बल्ले से खेली हैं आखिरी दोनों गेंदें, फिर भी 9 रन दिए जाते हैं। आमिर जमाल 50 पर 2। ज्यादा बिस्किट ज्यादा एनर्जी। इनकी PSL टीम ने ऐन मौके पे कैच ड्रॉप कर दिया। अब ये इसका इजहार सारी दुनिया से करेंगे। तो सोच मत, हो जा जज्बाती। पावर प्ले खत्म होने के बाद मुजीब को वापस आ गया और ये रन आउट हो जाएंगे। ऐसा आगे निकल आए थे, यहाँ गेंद लगता है कि विकेट कीपर के हाथ में रही नहीं, वरना ये बेग नहीं रहते यहाँ मैदान में। अच्छी बात यह है कि बाबर आजम बिल्कुल सुकून में हैं, कोई उन्होंने ऐसी चीज नहीं दिखाई जहां पे उनको ये तकलीफ हुई हो कि ये रन आउट मिस हुआ है। हालांकि ये क्रूशल रन आउट था, यहां एक और विकेट गिरती तो मुसीबत बढ़ सकती थी लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन बाबर पुरसुकून, उनको मालूम है कि ये बड़ा लंबा मैच है, आगे लेके जाना है, अच्छी बॉलिंग करनी है। इसके बरक्स हमने देखा कि जब शाहीन टीम को लीड कर रहे थे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखे। यहाँ ये देखिए अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो गेंद की तरफ देख रहे थे और दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई थी। हालांकि दोनों का ताल्लुक सियालकोट से है, उम्मीद करनी चाहिए कि हमांगी होगी बेग और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान। फ्लिप द बकेट चैलेंज KFC की जानिब से सबसे पहले अगर आप इस बकेट को पहन लेते हैं अपने सर पर तो आपको इनाम मिल जाता है, और ये भी इनाम मिल सकता था लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके। ये बाउंड्री बॉल थी, 1 रन जरूर मिलेगा, एक इजाफी गेंद भी। और कलंदर्स को यहाँ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, हमने देखा है हाथ नहीं खोलने देना चाहते बेग को, जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। यहाँ इसी से बचना चाह रहे थे लेकिन गेंद फील्डर के करीब से निकल गई और ये अंजाम अच्छा हो नहीं सका इस ओवर का। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स AC का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। ज्यादा बिस्किट ज्यादा एनर्जी। Good food, good life. वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट *6688# मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। अब हेलो
हेयर हर्बल शैम्पू के साथ अपने बालों को बनाएं थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। बाल मजबूत, पॉकेट फ्रेंडली। पैंटीन, जिसमें है चावलों का पानी और प्रो विटामिन फॉर्मूला, जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिन में। पैंटीन, बाल गिरे कम तो खुले ज्यादा। एक बार सेट हो जाएं तो फिर ये भी इतनी आसानी से अपनी विकेट देते नहीं, आपको अच्छी गेंद करना पड़ती है। इस बार अच्छी दौड़ लगाई विकेटों के दरमियान, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आउट करने के लिए आपको अच्छी बॉलिंग करना पड़ती है। ये उस तरह के खिलाड़ी नहीं है फखर जमान की तरह जो आपको बार बार मौके देंगे। इस तरह की जब पिच पर आप खेल रहे होते हैं तो आपको टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। ओसाका बैटरी फेसबुक पेज पर आप जाकर एक जश्न, एक खेल एक जश्न कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं गालिबन। ये ओसाका पावर रन हाथ के हाथ, ये तो बहुत ही पीछे रह गए, लेकिन इनाम फिर भी मिल जाता है। वो लाहौर में क्या कहते हैं कि जिन्हों लब्बे राज खान दुख देवे क्यों जान। जब इनाम आपको मिल जाता है ज्यादा भाग दौड़ या दौड़ धूप किए बगैर तो। लेकिन ये उम्दा शॉट, इस बार फिर फ्रंट फुट से पुल किया और यही खासा है ताहिर बेग का एक और चौका। पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था वहाब रियाज ने, थोड़ा हैमस्ट्रिंग में थोड़ा इश्यू प्रॉब्लम हुई, एक ओवर के लिए बाहर गए तो देखा है कि पेस थोड़ी कम है, एंड चेंज किया है तो इसमें इस ओवर में वो उतना अच्छा रिदम दिखा नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है यहाँ पेशावर ज़ल्मी के लिए। उनका फिट होना बड़ा ज़रूरी है। पिछला मैच इतना अच्छा नहीं गया उनके लिए, उनको रन्स भी हुए, सिर्फ 2 ओवर ही किए थे, लेकिन उनके 4 ओवर आज बहुत ज़रूरी होंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए। उसकी वजह ये कि आज वो 5 बॉलर से खेल रहे हैं, 3 पेसर्स हैं, नीशम नहीं खेल रहे जिनकी जगह राजापक्षे को खिलाया गया, तो कहीं ना कहीं वो भी हर्ट कर सकता है अगर वहाब अपने हिस्से के जो 4 ओवर में मुकम्मल नहीं करते। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी पेस जो है वो काफ़ी नीचे आई हुई है, 135, 36, 131 या आखिरी गेंद, तो कहीं ना कहीं उनको वो जो चोट है हैमस्ट्रिंग पे वो तकलीफ दे रही है। हवा में खेला लेकिन सिर्फ एक ही रन अब्दुल्ला शफीक बना सकेंगे। अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है, 28 रन इन दोनों ने बनाए हैं और जो रन औसत दरकार है वो भी हम कह सकते हैं कि उसको भी काबू में रखा है। 8.63, जब तक ये 9-10 की तरफ डबल फिगर में नहीं जाती तो शायद फिगर नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि ये गेम कल रात की तरह भी एंड तक जाएगा और मुकाबला सख्त होगा। इस पूरे HBL PSL में हमने सुपर ओवर नहीं देखा तारिक भाई। 68 पे 2। नई पेप्सी अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो व्हाई नॉट मेरी जान। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर, 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स। अभी *7777 हैश डायल करो। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क यूफोन, तुम ही तो हो। कैश से पीछा छुड़ाओ, डेबिट कार्ड चलाओ, शॉपिंग इतनी सिंपल, वाओ। डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। बचत हो गई, बचत तो बहुत अच्छी हो गई। बेहतरीन बचत के लिए इम्तियाज, पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन। Curly's का फ्लेवर सबसे आला, आला, आला। हाथ न रुकने
टपाल दानेदार, दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका, तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम, रोज वाटर और विटामिन B3 के साथ एडवांस हेयर रिमूविंग फॉर्मूला विद 3 एडेड बेनिफिट्स। स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती, स्किन को टू टोन होने से बचाए, कोई हार्श स्मेल नहीं देती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम। रेक्टर सुपर डाल, फिर देख कमाल। दरकार हैं और साइम अयूब, इनकी आमद हुई है। ये मिस्ट्री स्पिन करते हैं, मीडियम पेस कर सकते हैं। 2 ओवर्स इससे पहले कराए हैं इस चैंपियनशिप में, 2 विकेटें ले चुके हैं साइम अयूब, 1 विकेट दरअसल। एक रन मिल सकेगा अभी। वकार जिसका तस्करा कर रहे थे, और ये मौका है। और जो कहा जाता है बकरे की मां, ये कब तक खैर मनाएगी। फिर गलतफहमी पैदा हुई और ये बड़ी विकेट अब्दुल्ला शफीक, ये गिर गए और विकेट भी। दोनों का ताल्लुक सियालकोट से जरूर है, लेकिन कोई तालमेल नहीं, बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखी यहां पर। 2 ओवर पहले भी हमने देखा कि विकेट खोते खोते बचे, विकेट कीपर ने एक मौका दिया उनको। और देखने वाली बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक ऐसे बैट्समैन है जो डेंजर एंड पे आ रहे थे, बेग ने बिल्कुल उनको कमर कर दी और बड़ी विकेट खो दी। अब्दुल्ला शफीक इस तरह के मौके पर बड़े जरूरी खिलाड़ी थे, उनको इस विकेट पर रहना चाहिए था, लेकिन ये जो रन आउट है इसने कहीं ना कहीं परेशानी लाहौर कलंदर्स के लिए कर दी। 69 for 3। आया है एक नया खिलाड़ी, जिलेट ब्लू 3 फ्लेक्सी, जो दे सबसे आरामदेह शेव पूरे 7 शेव्स तक। जिलेट ब्लू 3 फ्लेक्सी अब सुपर लॉक पैक में। धोते जाओ। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। फैसल इस्लामी, पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामी बैंक। मैं हूँ शाहीन अफरीदी और मेरा बैंक है फैसल इस्लामी। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। You know you're awesome. You're doing awesome. You're doing awesome. You're doing awesome. वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट, स्टार 6688 हैश मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। को आए हैं जब उनकी टीम का एक पांव दलदल में लग रहा है और लगता है एक और मुश्किल शाम उतरी है इस बैटिंग के खेमे पर। बकार, अगर आप छक्का लगाते हुए आउट हो जाएं तो उससे इतना दुख नहीं होता उस कोशिश में T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर आप रन आउट हों इस फॉर्मेट में तो ये फिर दुखदायक है। रनआउट किसी भी क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। ये रनआउट ऐसी विकेट है जो आप बेसिकली मुफ्त में दूसरी टीम को दे देते हैं। T20 क्रिकेट में ठीक है, आपको भागना पड़ता है, तेजी से भागना पड़ता है, आपको चीकी सिंगल्स भी लेने पड़ते हैं, रनआउट्स होते हैं, लेकिन बहुत क्लोज रनआउट होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। कहीं थोड़ा सा आप मिसप्लेस होते हैं और आप रनआउट हो जाते हैं और 1 आधे इंच से रनआउट होते हैं, इस तरह नहीं। और इसका फायदा ये है कि साइम अयूब जल्दी जल्दी अब अपना ओवर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे दबाव कम होगा उमर जई वहाब रियाज जोनों पर। इनवेरेक्स सोलर एनर्जी इस HBL PSL में मुकम्मल सोलर सिस्टम जो है सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेटें उड़ाने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा इनवेरेक्स की जानिब से। फिर गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, सिर्फ 5 ही रन साइम अयूब ने दिए। बाबर आजम बेहद खुश होंगे उनकी काविश से। 73 पर 3।
हाथ से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। फैसल इस्लामी, पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामी बैंक। मैं हूँ शाहीन अफरीदी और मेरा बैंक है फैसल इस्लामी। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। इनकी पीएसएल टीम ने ऐन मौके पे कैच ड्रॉप कर दिया। अब ये इसका इजहार सारी दुनिया से करेंगे। तो सोच मत, हो जा जज्बाती। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त कपड़े। यही एक शिकवा है इस पूरे सीजन में, जो इनके शायकीन और जितने भी इनके हिमायती हैं कि बॉलर्स का साथ दिया नहीं उनके बैट्समैन ने, खासतौर पर दूसरी बैटिंग में। नारी भाई, एक वक्त ऐसा था कि लाहौर कलंदर लग रहा था कि इनको कोई हरा नहीं सकता। इनकी बॉलिंग अच्छी थी, इनकी बैटिंग भी काम कर रही थी, चल रही थी। जब विकेट थोड़े से ट्रिकी आए और थोड़ा जब टॉस इनके हक में नहीं गया, तो फिर ऐसा लगा जैसे इनको समझ नहीं आ रही थी कि मैच कैसे जीते जाते हैं। स्पेशली चेजिंग में बिल्कुल इनको समझ नहीं आती। कभी शाहीन ऊपर आ जाते थे, कभी बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली, कभी बेग को निकाल देते थे, कभी ले आते थे। तो बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियां की, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन जब चेजिंग में इनके लिए काम नहीं किया। ये पिछले बरस मोहम्मद हफीज और कामरान गुलाम थे इनके बैटिंग ऑर्डर का हिस्सा, जो कि मोहम्मद हफीज को बड़ा वसी तजुर्बा था इंटरनेशनल क्रिकेट का। कामरान गुलाम का अच्छा टेम्परामेंट था। डील ऑफ नेटवर्क डाउनलोड कीजिए, 1000 अमरीकी डॉलर आप जीत सकते हैं। तो उसकी कमी रही है, क्योंकि ये अगर आप पीडीपी से खिलाड़ी ले आते हैं क्लब क्रिकेट का तो उनको तजुर्बा हो सकता है, लेकिन ये खेल जो है ये बहुत ही बुलंद सतह है। यहाँ पर फास्ट बॉलर काम में आ सकता है जल्दी, कम उम्री में, लेकिन जब आप बैटिंग इस मुकाम पर इतने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने करते हैं इतने दबाव में, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ये जो टू व्हीलर्स है ये चल सकता है, इसमें शॉर्टकट में आपका काम हो जाता है। कई बार आप जल्दी भी निकल जाते हैं इशारा तोड़ के भी, लेकिन जहाँ दलदल होगी, जहाँ पर कोई सड़क आपको हमवार नहीं मिलेगी, वहाँ फोर व्हीलर ही आपको काम देता है। फोर व्हीलर से आपकी क्या मुराद? मंझा हुआ है डोमेस्टिक का मोहम्मद हफीज, बिल्कुल आप बिल्कुल कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक प्रोफेसर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ मसला जो लाहौर के लिए हो रहा था कि वो साइम का जो ओवर था वो चाह रहे थे कि उसको बड़ा किया जाए, क्योंकि उनको भी मालूम है वहाब इंजर्ड है, तो ये ओवर निकालने के चक्कर में है। लेकिन वहाब की जो अच्छी बात ये है, गिव अप नहीं करेगा और यहां रन आउट हो सकता है एक और। बाल बाल बचे एक दफा फिर। बिलिंग्स और बेग दोनों को कोई अंदाजा नहीं, पहले बेग और शफीक थे। इस तरह तो मैच नहीं जीतेंगे। बेग को कोई अंदाजा नहीं कॉलिंग का। आई थिंक ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल नहीं हिलते, अपनी क्रीज नहीं छोड़ते। ये अगर विकेटों को लग जाता गेंद तो बिलिंग आउट होते, और बिलिंग आउट हो जाते तो इनकी कमर बिल्कुल टूट जाती। और ये जेस्चर जो दिया है अभी बिलिंग्स ने, वो वाजे नजर आ रहा है कि वो खुश नहीं है बेग से, क्योंकि पहले भी एक रन आउट करा चुके हैं। जरूरी है कि बिलिंग उनको काम डाउन करें कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो गया जो होना था वो हो गया। शॉट 4 रन। और यहाँ कुछ मुतमईन होगी लाहौर की टीम और उनके सपोर्टर्स। थोड़ी सी जान मिल गई ऑफ स्टंप के बाहर। ये उम्दा शॉट खेला बिल्कुल आखिरी मरहले पर नजरों के नीचे। देखिए ये होता है जब आपको बड़ा प्लेयर या नामवर प्लेयर आपको हौसला देता है, क्योंकि पिछले ही गेंद पर रन आउट बचे और बिलिंग ने आके कोई बात की जिसका असर वाजे नजर आया। 6 रन हुए हैं अभी तक इस ओवर में। लाहौर चाहेगी कि इसको 10 किया जाए या 12 किया जाए, क्योंकि अब ये जो
रन रेट रिक्वायर्ड है वो भी ऊपर जा रहा है। अगेंस्ट एंगल खेलने के लिए गए थे, फिर दूसरे रन के लिए निकले बाहर, पहुंच गए दोनों खिलाड़ी। Nestle, good food, good life. हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे। Stay ahead of hair fall. Introducing new Set and Touch Hair Fall Solution Shampoo Plus Conditioner. The extraordinary touch. Set and Touch. कर्लीज का फ्लेवर सबसे आला, आला, आला। हाथ न रुकने वाला, कर्लीज का फ्लेवर सबसे आला। लाइन शेल हीलिक्स फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो आपके इंजन को दे 45% ज्यादा हिफाजत ताकि आप आगे बढ़ते रहें। ज्यादा बिस्किट, ज्यादा एनर्जी। वीकली सोशल पे बड़ा डिस्काउंट *6688# मिलाएं और अब सिर्फ 99 रुपए लोड में 5 GB सोशल, ढेरों मिनट्स और SMS के साथ डिजिटल हो जाए। Zone 4G। Nescafe Chilled Latte. Out for that block hole delivery. There it is, straight up. Well, it doesn't take any warming up. No looseness for Irshad. Performed exactly the same role last night. Came on as the sixth bowler. Finished off the game. Huge wicket that. Huge wicket. Get rid of Azam Khan. And then Colin Monroe had been tied up in knots. Slower ball on that occasion from Irshad. He was irresistible. And just 18 runs in his spell. And we so often talk about a moment of brilliance, whether it's in the field, whether it's some tactical change, and it was his setup earlier on. We'll just reroute this through the Tapal Tea Lounge. Our fans enjoying a cup of tea. It was his over. He bowled a couple of well-landed Yorkers to Alex Hales, then pitched one up. And it was a fielder on the outside who didn't get away with the second run. And that caused for Azam Khan to stay. And Salman Shah then bowled to the new man. How's that for a piece of timing? He should pick up a couple of runs. So the going probably only going to get tough from here on in, considering the bowling spell you saw from Peshawar and their bowlers last night. A couple of good overs can just push that required run rate into double digits, and then from there on it's a chase that won't be that easy. That should be 4. That is a very, very clever from Sam Billings. Yeah, and cool heads out there with the bat. This rate is not out of reach. It's less than 9s now after the boundary from Billings. Just takes a few paces towards the bowler. Bowler sees him coming, tries to change his delivery halfway through. Bowls a wide long hop. All it takes is exactly the same way with the bowlers. A couple of tight overs, the rate goes up. One good over with the bat, and you're right back in it again. You'll have to re-bowl that. Just over-correction with line. Well, the fans have been engaged all throughout this HBL PSL, and we've got another winner for you. The TikTok off the match goes to Amjad Sumro 70.
decision pending. Nicely played, nicely played. What a shot from Sam Billings. Yeah, that is magnificent. Just laid back a little bit here. All of the pace on the ball was from the bowler. Just allowed it to come alongside him and just placed it deliciously backward a square. And here's the big over we're talking about, 13 from Irshad. And the rate is very, very much within the capabilities of the Qalandars. They've just got to keep their heads. It's just right how he's just playing around with the bowler. First he takes a couple of steps down, forces the bowler to change the lane, and then those wrists in that second shot. Will they look for two? And they will also get it comfortably. A huge roar goes up at the Qaddafi Stadium. The 11th goes for 15, 96 for 3. JS क्रेडिट कार्ड से फ्यूल यूटिलिटी बिल्स एजुकेशन फीस और ग्रोसरी पर हासिल करें इंस्टेंट कैशबैक। अभी कॉल करें और अपना JS क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खर्चों की प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्व। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। ओह, सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। इनकी PSL टीम ने ऐन मौके पे कैच ड्रॉप कर दिया। Mujib to bowl his final over here. Just from the Qalandars' point of view, you just want Babe just to get his head in the game a little bit. Billings is going great. Wide open spaces, nudge it for one. Or crash it for 4 over extra cover. 100 up for the Qalandars. Yeah, 2 full on that occasion. And these boundaries, 1 or 2 in each over, just bringing them back. Now this requires 8.3. And Tahir also knows, been playing. He opened the innings. Gotta go. Hit some of those. Exactly what you're talking about, Butch. Is that another big shot? Hasn't timed this. Lands in front. It's just about changing his gear a little bit. Just looking for those options, trying to make something happen. Tahir big, and there was an example in the previous delivery. It was pitched up. Fielders inside the ring, and he gives it plenty of bat on that to get it up and over. Now, Sam Billings, he'll require all the assistance from the other end as well. Yeah, one thing he can't do is chew up deliveries. Rather him have a slog and get out. Billings is into his stride pretty quickly, finding the middle of the bat. They cannot do is chew up balls, dot balls, put pressure on his partner. We're talking about dot deliveries. Half of what he's faced, he's played dot. 18 out of the 37 now are dot deliveries, and those are 18 opportunities missed in terms of scoring runs, even if they were ones. And sometimes that becomes the difference. Mujib's done with 4, 35 for none for him. 12 overs done, 104 for 3. As we head into the Peshawar Zalmi strategic timeout. Weekly social पे बड़ा डिस्काउंट. Star 6688#